Welcome back, students. In the previous video, we have discussed about static variables and instance variables. Now actually satisfactory example was not given in that video, so I thought to explain it more clearly by using one more example. So here is the example, like class variable demo, and we are writing here static int count. We are using a static keyword. It means it is a static variable and defined at the class level, right? Now one function is there that is going to use what? Count. So count plus plus. So count plus plus actually means what? Count is equal to count plus 1. This is the meaning of count plus plus. Now here we made one function void main, and we have created two objects obj1 and obj2, and we are going to call the function increment, this function increment, by using both the objects, means by obj1 and obj2. And at last what we are doing here, we are printing the value of count by using obj1 object and obj2 object. Now we will see what will be the output here. Now as you know what, that first thing that you have studied in the previous slide is static variables are created by using the static keyword. First point. Second point that you have studied about static variable is only one copy will get created for a static variable. Means only one copy ही create होती है static variable की, that means this is a count. ठीक है, only one copy will get created and initially it holds the value 0. And this copy will get shared by all the objects. How many number of objects you are creating, it depends on you. आप कितने भी objects बना लो, all these objects will share the same copy. Means whatever changes will done by object 1, same changes will get effect to all the objects. ठीक है, आपने जो भी चेंजेस एक ऑब्जेक्ट के थ्रू किए हैं वो सारे ऑब्जेक्ट्स पर आपके इफेक्ट होंगे, right? Next, here we have created obj1 and obj2, right? So what will happen, आपका mains execution start होगा. So you have created two objects obj1 and obj2, and as you know what, a static variable will get created and the name is count, and initially the value is 0. Now you know what, key if two objects will get created same, that means both the objects will share the same variable, static variable है ना, दोनों same को share करेंगे. Now obj1 dot increment, so when you will call this statement, the control will pass here, and count plus plus. Count plus plus means the value of count will get changed here, so it will going to be changed 1, right? Now obj2 dot increment. Now what do you think, when obj2 will get passed here, that means control will get passed to this line. So what will happen here, obj2 dot increment, so it will use the previous value 0 or the updated value 1. It will use the updated value, because we have studied what, that whatever changes will be done by one object, it will get reflected back to the other objects also. It means what, when obj1 has updated the value of count from 0 to 1, now it will get updated to other object also by, that means to obj2 also. So प्रीवियस वैल्यू क्या थी, यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो कि स्टैटिक वेरिएबल अपनी प्रीवियस जो वैल्यूज़ होते हैं ना उनको रिटेन करके रखते हैं, है ना, उनको रिटेन करके रखते हैं, यानी कि वो वापस से अपनी इनिशियल स्टेट पे नहीं जाएंगे. सो अगर इनकी प्रीवियस स्टेट क्या है, अब इट गॉट चेंज टू 1 एक्चुअली. सो व्हेन obj2 विल कॉल दिस, so count plus plus again, so previous value was 1, now it will get updated to 2, right? Now when you will print here obj dot count, अब you will get confused when you will go through your notes. आपके notes में लिखा होगा, जो हमने previous slide में discuss किया था, कि static variable are accessed by its class name. We have discussed that point. last point था आपकी previous slide में कि static variable जो है वो कैसे share होते हैं, कैसे access होते हैं, अपनी class name के through. but class name से तो हम access कर ही सकते हैं, but we can access it by using the object name also. हम उनके object name से भी उनको access कर सकते हैं, right? but अगर आप जनरली कहीं पे भी पढ़ोगे अबाउट स्टैटिक वेरिएबल इन एनी बुक, सो इट विल बी गिवन लाइक दिस ओनली, कि दे आर एक्सेस्ड बाय द क्लास नेम. बट इफ़ यू विल एक्सेस इट बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट नेम ऑल्सो, देन देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम, राइट?
but whatever changes will be there by one object, it will get reflected to the other object as well. So when we will print here obj1 dot count, now look at here, obj1 का count क्या है, ये क्या है obj1, this one, ये है ना obj1, इसका count की क्या वैल्यू है 2, अपडेटेड वैल्यू कितनी है 2, तो क्या प्रिंट होगा 2. नाउ SOPLN obj2 डॉट काउंट, लुक एट हेयर इन द सेकेंड लाइन हेयर, यहाँ देखो obj2 डॉट काउंट हेयर. नाउ obj2 मीन्स ये, इसका काउंट मीन्स ये, तो obj2 dot count this, what is the value for this 2 again, so that means what is the updated value for both the objects, that is 2 and 2. So finally you will get the answer as 2 2, right? So I hope this is clear to you. Now this was for a static variable. Now assume if it is going to be a instance variable, if it is going to be an instance variable, then what will happen? In that case, this static keyword will not be there, because instance variables are created simply, means in the class above all the methods, constructor or any block, लेकिन क्लास के अंदर डिक्लेयर होते हैं. ठीक है, अब देखो काउंट की वैल्यू हमने ली कितनी 0, काउंट को प्लस प्लस किया, बाकी पूरा प्रोग्राम सेम है, एवरीथिंग इज सेम, बट वी नो वर्ड की इंस्टेंस वेरिएबल के लिए डिफरेंट कॉपीज क्रिएट होती हैं फॉर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. नाउ हेयर when you will write this line obj1, so what will happen, obj1 will get create in the memory. So obj1 का एक count create होगा, ठीक है, because we know for each and every object the instance variable will get some memory. So here the initial value is 0. Now when you will execute this line obj2, तो जैसे ये आपका क्रिएट हुआ, तो आपको पता है ना कि व्हेन द ऑब्जेक्ट विल गेट क्रिएटेड देन इंस्टेंस वेरिएबल विल आल्सो गेट क्रिएटेड. हमने पढ़ा था कि इंस्टेंस वेरिएबल कब क्रिएट होते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट विल गेट क्रिएटेड. तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो उसका इंस्टेंस वेरिएबल भी क्रिएट हो गया, तो obj1 से इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट हुआ. इन द सेम वे obj2 से भी क्या होगा, वन इंस्टेंस वेरिएबल विल गेट क्रिएटेड. Now the initial value we have given here is 0. Now you can take any other value also, it is the default that means it is the value that we are going to give here. Initial value is 0, आप चाहें तो you can take any other value also. Now up to these two line, is that clear? इन दोनों लाइन से क्या हुआ, ये मेमोरी ब्लॉक्स क्रिएट हो गए, राइट, मेमोरी एलोकेट हो गई. नेक्स्ट इज obj1 डॉट इंक्रीमेंट. सो जब obj1 का इंक्रीमेंट कॉल किया, सो द कंट्रोल विल पास हेयर एंड इट विल अपडेट द वैल्यू ऑफ दिस काउंट. अब ये किसका काउंट इंक्रीमेंट करेगा, फॉर obj1 और obj2, फॉर obj1. रीजन बिकॉज यू आर कॉलिंग द फंक्शन फॉर obj1. यहाँ देखो obj1 के लिए यू आर कॉलिंग इट, सो काउंट किसका इंक्रीमेंट होगा, obj1 का ऑब्वियसली. सो इट विल गेट अपडेटेड टू 1, राइट. नाउ फॉर द नेक्स्ट, now this line obj2 dot increment, so when you will call this, so you are calling it by obj2, सेकेंड ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हो, सो काउंट किसका इंक्रीमेंट होगा, ऑब्जेक्ट 2 का. सो दैट मीन्स फॉर दिस इट इज गोइंग टू बी 1, राइट. नाउ व्हेन यू विल प्रिंट हेयर obj1 डॉट काउंट, तो obj1 के काउंट की क्या वैल्यू है हेयर 1, सो ये क्या प्रिंट करेगा 1. And then when you will call this obj2 dot count, so obj2 dot count means this, what is the value here 1, so it will print here again 1. So have you noticed the difference, means आपने जो changes static variable में किए थे, वो जो changes थे that will get retained, है ना, that means it will not go to its initial state every time, है ना, irrespective of all the objects. लेकिन क्या होता है इंस्टेंस वेरिएबल में, फॉर एवरी ऑब्जेक्ट द डिफरेंट इंस्टेंस वेरिएबल्स विल गेट क्रिएटेड, and whatever changes you are doing in that by any object, that will not get reflected to the other object. So this was actually the example of static and instance variable. So I hope it's now more clear to you. So thank you, and in the next video we will study about constructor. Thank you.